Good morning, dear students. Again, welcome back in the class. Today we will consider some more problems based on quadrilaterals, special type of quadrilaterals. Here, this is example number 4, in which L and M are two parallel lines. P is intersecting them as a transversal line. The bisector of all interior angles are making a rectangle, making a quadrilateral, and we have to prove that ABCD become a rectangle. AD is the bisector of angle PAC, CD is the bisector of angle ACR, BC is the bisector of angle ACS, and AB is the bisector of angle QAC. Then we get a quadrilateral ABCD, and we have to prove that this is a rectangle. So to prove the result, we started that AD is the bisector of angle PAC. So angle DAC, because we required to get the results, so we take only this angle, otherwise we can take this one or this one, any one of them. DAC is equal to half of angle PAC, ये इसका bisector है. तो similarly we can write angle ACB is half of angle ACS. Now PQ parallel to RS and line P is the transversal line. So therefore angle PAC equal to angle ACS. These are the alternate angle because lines are parallel, PQ and RS. Dividing both sides by 2, get half of PAC is equal to get half of ACS. First we have proved that half of PAC is DAC and half of ACS is ACB. So both will be equal, which is a pair of alternate angle because these two are lying here. So we can, these two are also the alternate angle in respect of these two lines. So we can write here that which is a pair of alternate angle, which is a pair of alternate angles. Therefore we can prove that AD will parallel to CB. ये जो लाइन होगी इसके पैरेलल होगी. Similarly we can prove that CD parallel to AB. Now you can see that ABCD is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. So by definition we can say ABCD is a rectangle. Sorry, ABCD is a parallelogram. Now you know that parallelogram is a rectangle if any one angle of the parallelogram is right angle. तो हम इसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करेंगे. So again we consider PQ parallel to RS and P is the transversal line. What's the line? So therefore we can say that therefore angle PAC these two are the co-interior angle. तो इन दोनों का सम 180 होगा प्लस एंगल PAC प्लस ACR इक्वल टू 180. रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल. एंगल्स दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे. हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ ACR इक्वल टू 90. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2. both side by 2. So half of PAC we already in the first, this is angle DAC and half of angle ACR similarly is angle ACD is equal to 90. Give name third. Now we can consider यहां पर हम यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड लिख देंगे.
इसको फोर्थ नाम देंगे, थर्ड में हमने लिखा नहीं। आप जैसे जब हमने सिमिलरली दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल, तो वहां पर आप यहां पर भी इसको भी आप लिख सकते हैं। तो यू विल बी केयरफुल अबाउट इट दैट ACD इज हाफ ऑफ ARC। तो यहां पर हम फर्स्ट एंड थर्ड यूजिंग लिख देंगे लॉजिक। दिस इज फोर्थ। नाउ ट्राइंगल इन रेक्टेंगल, सॉरी नाउ इन ट्राइंगल ADC, एंगल D प्लस एंगल DAC प्लस एंगल ACD is equal to 180 by angle sum property. Using 4 we can write it, this is 90 degree, so angle D plus 90 is equal to 180. So get angle D is equal to 90 degree. So therefore ABCD is a rectangle by definition. So we can give result that therefore ABCD is rectangle. नीचे लिख देंगे बाय डेफिनेशन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यहां पर हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये इसके बाइसेक्टर्स होंगे। They are making a quadrilateral PQRS and we have to prove that PQRS is a rectangle. To prove any quadrilateral that is a rectangle, there are two methods. One is, firstly we have to prove that this is a parallelogram as we used in the previous example number 4. And other is, if each angle of the quadrilateral is 90 degree, then it is a rectangle. So we will consider that concept here. हम लिखेंगे, given लिखेंगे ABCD is a parallelogram in which AP, BP, CR and DR are the bisectors of angle A, angle B, angle C and angle D respectively. To prove PQRS is rectangle. Proof. No one is to draw any construction. हम लिखेंगे since AP is bisector of angle A, so we can write therefore एंगल DAP, यहां पर हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DAB, एक नंबर। सिमिलरली लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, थ्री लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
BCD and angle 4 is equal to half of angle ADC. Now triangle एंगल 1 इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं इसको भी हम, बिकॉज मे बी समवेयर वी कैन यूज इट. एंगल 1 इज इक्वल टू 5 विथ हाफ ऑफ DAB. इसको 6 नाम देंगे. 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ DAD. 3 इज इक्वल टू 7 हाफ ऑफ BCD. 8 नंबर दे देंगे इसको. एंगल 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ DAC. So we will use any, then we can use it. Now in triangle, APB, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. एंगल P plus 1 plus 2 is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. We will get some more results here. Since ABCD is a parallelogram, therefore angle DAB plus angle CBA is equal to 180. रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल्स divide both side by 2. By 2 get half of angle DAB plus half of angle CBA is equal to 90 degree. Half of angle DAB we can write angle 1. Half of CBA angle 2 is equal to 90 degree. Give name first. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देंगे. फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ इन ट्राइंगल PAB एंगल P plus 1 plus 2 is equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी. फिफ्थ को यूज करेंगे. सो एंगल P plus 90 इज इक्वल टू 180. सो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. Therefore PQRS is rectangle. Hence proof. Now the theorem 8.8. Thank you. We will consider this theorem tomorrow in the next videos, because there is a different concept. So do only these two theorems. Thank you.